हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज इन डिटेल्स। आपको इस चैप्टर के नोट्स इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिश्यूज होते क्या हैं? Tissues form the second basic level of the body organization. Tissues refer to the group of cells which are similar in origin, structure and function. The term tissue was very first time coined by Bichette. Systematic scientific study of tissue is known as histology, and the term histology was coined by Mayer. There are four different types of tissues: epithelial, connective, muscular and nervous tissue. हम अब एक एक करके सारे टिश्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज द एपिथेलियल टिश्यूज। नाउ एपी का मतलब होता है अबव एंड थीलिया मींस टू ग्रो। टू ग्रो अपॉन अनदर टिश्यूज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। एंड इस टिश्यू की खास बात होती है कि द सेल्स रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स। अपर लेयर इज नोन एज बेसल लैमिना एंड लोअर लेयर इज नोन एज द फाइब्रस और द रेटिकुलर लैमिना। एंड एपिथेलियल टिश्यू की मैक्सिमम रीजनरेटिव पोटेंशियल होती है। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्स रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो अपर लेयर होती है बेसल लैमिना, दैट इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, एंड द लोअर लेयर दैट इज द फाइब्रस और रेटिकुलर लैमिना, इट इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ द कोलाजन फाइबर्स। एंड सेल्स आर वेरी डेंसली पैक्ड, सो दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द डिफरेंट जंक्शंस। हम जंक्शंस बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। नाउ द टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो होते हैं वो सिंगल लेयर के बने होते हैं। इट कैन बी स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सूडो स्ट्रेटिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड। ऑन द अदर हैंड जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसके मेनी लेयर्स उसमें होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, जहां की आपको सिमिलर लेयर्स मिलेंगे, एंड ट्रांजिशनल जहां डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स आपको मिलते हैं। नाउ फर्स्ट कैटेगरी इज द सिंपल एपिथेलियम। मैंने आपको जैसा बताया कि इट इज यूनिसीरिएट, दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इट इज क्लासिफाइड इनटू 5 मेन टाइप्स: सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ciliated columnar pseudo stratified epithelium, and the last category is the specialized epithelium. Now the first category, that is simple squamous epithelium. It is composed of the flat cells, squamous cells, and अगर हम इसको lateral view में देखें तो it gives the wavy appearance, therefore it is also known as the tessellated epithelium. Now out of all the tissue, squamous epithelium is the finest of all the epithelial tissue. So जहां पे भी छन्नी का काम करना है, फिल्ट्रेशन का काम करना, वहां आपको ये मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल alveoli of the lungs, lining of the capillaries and the glomerulus, and many different other locations. इसके बाद कैटेगरी जो आती है वो होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, characterized by the round cuboidal cells, classified into 3 main types: plain cuboidal or glandular epithelium, found in almost every gland except alimentary canal. Then the next category is ciliated cuboidal epithelium, found in ependymal linings of ventricles of the brain, and brush border cuboidal epithelium, provided with microvilli, found in PCT, proximal convoluted tubule. Now next category is the simple columnar epithelium. It is characterized by the columnar cells with elongated nucleus. Again ये भी 3 types के होते हैं: plain columnar epithelium, found primarily in the alimentary canal, then ciliated columnar जिसके आपको टॉप पे cilia मिलेगा, found in fallopian tube of females. Brush border columnar epithelium, it is provided with microvilli and found primarily in the small intestine, जहां ये responsible होता है for the digestion, absorption of the digested food. अगली कैटेगरी जो आती है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। सूडो मींस फॉल्स, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयरिंग, आपको लगेगा मल्टीपल लेयर्स जहां पे एक्चुअली ये सिंगल लेयर का बना होता है। और इसमें कॉलमनर सेल्स होते हैं, इसलिए इसका नाम ciliated columnar pseudo stratified epithelium होता है। इट इज फाउंड प्राइमरली इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, vas deferens, epididymis and eustachian tube. Now अब आफ्टर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अगली कैटेगरी जो होती है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, जहां क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स आर परफॉर्मिंग सम स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। पहली कैटेगरी होती है जर्माइनल एपिथेलियम, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग द testis and ovary. Then the next category is the pigmented epithelium,
when pigments accumulate in the cuboidal cells found mainly in choroid and in retina. Neurosensory epithelium क्या होता है? It is primarily a modified columnar epithelium find in which you can find in all the sense organs. Now, the second category is the compound epithelium, which is made up of 2 or more layer of cells. Occurs on surface experiencing stresses, any kind of stress, physical stress, mechanical stress, any sort of stress. Stratified epithelium is the first category, which is characterized by repetition of similar layers. Now classified into 3 major types. First is the stratified squamous epithelium. Again, it is classified into 2 categories, keratinized stratified squamous epithelium and non-keratinized. The next category is the stratified cuboidal and the third category is the stratified columnar epithelium. Now, transitional epithelium. अब हम जैसा कि आपको बताया मैंने फर्स्ट स्लाइड में कि transitional epithelium is the exception where cells don't rest upon the basement membrane. It is made up of different types of layers and therefore it is highly stretchable. Found in those places जहां पे कि आपको stretchability की requirement होती है. Example, pelvis of kidneys, ureter, urinary bladder, urethra. यहाँ पे आपको स्ट्रेचेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.